All right, we are moving on now. We have some breaking inputs coming in. The Allahabad High Court has upheld the order for a survey of the Shahi Jama Masjid in Sambhal, dismissing Mosque Committee's plea, challenging trial court's November 2024 order on a petition alleging that a temple was dismantled to construct the Mughal-era mosque. Massive violence erupted in Sambhal on the 24th of November 2024 when a mob gathered to stop Advocate Commission team, which arrived for the survey at the 500-year-old mosque and clashed with the police. Now, with the order from the single bench of Justice Rohit Ranjan Agarwal, the survey case is expected to proceed in the Sambhal District Court. So, the Sambhal survey order has now been upheld by the Allahabad High Court. This was an order for a survey of the Shahi Jama Masjid. Let's listen into what Vishnu Jain said about this. हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन है, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये बताइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आज जो फैसला दिया वो फैसले क्या कुछ है और क्या कुछ उसके मायने हैं? देखिए, आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 नवंबर और 24 नवंबर को जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे को पूर्णतः जो सर्वे नियुक्त अपॉइंट हुआ था, जिस ऑर्डर से ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी के ऑर्डर से, उस ऑर्डर को वैलिड घोषित किया है। और जिन मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये गुहार लगाई थी कि लोअर कोर्ट बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए सर्वे नियुक्ति नहीं कर सकती है, सर्वे अपॉइंटी नहीं कर सकती है, उस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। और जो ट्रायल वहां पे स्टे किया हुआ था ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, उस स्टे ऑर्डर को भी वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब ट्रायल आगे बढ़ेगा और जो देश के बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठाया था कोर्ट की मर्यादा पे, कोर्ट के ऊपर, पार्टीज के ऊपर, और ये बोला गया था कि कैसे नियुक्त हो सकता है सर्वे कमिश्नर एक्स पार्टी। उन सारी बातों को आज कोर्ट ने एक बहुत ही वेल रीजन जजमेंट से, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने वेल रीजन जजमेंट से उन सारी चीजों को डिसमिस किया। क्या सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी? सर्वे की रिपोर्ट अभी सील कवर में है और ट्रायल आगे बढ़े, इसके क्लैरिफिकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। एक आखिरी सवाल सर, कि जनता के मन में यह भी भ्रम है कि क्या जो है इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लागू होता है, कि दूसरा पक्ष हमेशा इस बात पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज का एडमिटेड केस है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। जो मॉस्क कमेटी है वो भी मानती है कि एएसआई की इजाजत से वो अंदर जा रही है, और एएसआई ये मानती है कि वो अपना वहां पे एक्चुअल फिजिकल पोजीशन लूज कर चुकी है। तो एएसआई एक्ट 1958 यहाँ पे लागू होता है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। और अगर एएसआई एक्ट 1958 लागू होता है तो ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की परिधि में नहीं आता है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A में लिखा हुआ है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का ऑर्डर यहाँ पे लागू नहीं होता। यानी हिंदू पक्ष की कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत मानी जाए। बिल्कुल, एक अच्छा लीगल प्रोसेस फॉलो किया है। मैं किसी चीज को जीत या हार के रूप से नहीं लेता हूं, एक लीगल आर्गुमेंट था। मैं शुरू से बात कहता आ रहा था कि लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है, कोर्ट की मर्यादा पे गलत टिप्पणी की जा रही है, पार्टीज की मर्यादा पे गलत टिप्पणी की जा रही है, और भ्रम फैला के कहा जा रहा है कि सर्वे का ऑर्डर एक्स पार्टी ले लिया गया, और ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि बहुत बड़ी इलीगैलिटी की गई थी, बहुत बड़ी चोरी की गई थी। आज उस बात को एक लीगल जस्टिफिकेशन, जो हम बराबर रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का हवाला दे रहे थे, आज उस चीज को कहीं ना कहीं मान्यता मिली। All right, we have Siddharth joining us from the newspaper and Adib as well on the broadcast. Let's first go across to Siddharth for more on the order copy that we've accessed. Yes. Two very important points to be made here. One, of course, is the court basically upholding the claim made by Vishnu Jain and others that this particular Sambhal Jama Masjid site is actually not covered by the provisions of the Places of Worship Act 1991, and that's clearly spelled out in paras 117 as well as 118. So let me in fact take you through para 118. It says, this is not a case where any conversion of place of worship is taking place or any religious character of the place of worship is being changed. Plaintiffs have not only sought right to access to a protected monument declared in the year 1920 under Section 18 of the Act of 1958, once it is an admitted position that the structure in question has been declared as a protected monument in 1920 and the same remained unchallenged till date, it is bound to be governed by provisions of law which existed when the notification was made, and thereafter the laws enacted to govern such protected monument. Thereafter, in the conclusion, the judge says, this to sum up, I find that the court below had not committed any error, irregularity or illegality in granting leave to institute the suit before the expiry of period of notice under Section 82 of the CPC, as it was never objected by the government or of its officials. Defendant numbers 1 to 5 and revisionist defendant number 6, being a private person, is not covered under the canopy of Section 80. In view of the finding recorded above, present suit is not prima facie barred by provisions of the Act of 1991. In fact, it has been filed seeking right to access to property in dispute under Section 18 of the Act of 1958, being a protected monument.
Considering the facts and circumstances, I find that no interference is required in the order dated 19th of November 2024, passed by the court. So basically, the appointment of the Revenue Commissioner, the conduct of the survey is all perfectly legal. The challenge that was presented on the part of the Masjid committee in this case has in fact been not upheld by the court. Right. Thank you, Siddharth, for getting us the details. Let me go across to Adib now. This is a setback for the Masjid side. Well, definitely, Swati sees it's a setback for the Masjid committee as they were expecting some relief from the Allahabad High Court after the lower court in Sambhal, the order for the Advocate Commissioner survey in the Sambhal Mosque, and the Allahabad High the Mosque committee, they reached to the Allahabad High Court for relief. This revision petition was filed by the Masjid committee, and they were expecting some sort of relief that the Allahabad High Court will be giving, but it's a significant judgment that is coming from the Allahabad High Court, where they have upheld the ruling of the lower court, in which the lower court had allowed for the survey in the Sambhal Mosque. And importantly, what the Allahabad High Court has given is that the Sambhal Mosque is not covered under the Places of Worship Act. So the Masjid committee, they were saying that if the Sambhal Mosque is being covered in the Places of Worship Act, there is a different case that's still pending in the Supreme Court. So that means the Allahabad High Court has given a clear verdict on this line, and now it's a setback for the Mosque committee, as the trial for this will now continue in the lower court of Sambhal, Swati. All right, Adib, thank you for getting us the details. With that, we're slipping into a very short break. A lot more lined up on the other side.